Hello students, welcome to this new video of your chapter 3, and the name of the chapter 3 is force and pressure. So topics to be covered in this video are given here. So all the topics are explained in detail. So let's start discussing them one by one. So our first topic is force. So force is an external cause which cannot be seen but it can be felt on the basis of effect it produces on different objects. Like you have a paper over there. Now if I apply a force, its shape will be changed. So force actually cannot be seen but it can be felt, just because it is folding this particular paper, or it is changing the shape of this particular paper. So this is how we can experience the force. Now, definition of force may be defined as an external cause which changes or try to change the state of an object, state or shape of an object. Well, this definition I think you people must have gone through. So now, what actually force can do? It can change the shape of an object, direction of an object, or speed of an object. These are the some effects of the force, though it can have many effects, but I have described some main effects of the force. Now, moving ahead, we will talk about the moment of a force. So this is I think a new topic for you. So moment का मतलब basically होता है, suppose you can see that in the picture that here is a point O, एंड ओ से एक डिस्टेंस है हमारी डी, उस डिस्टेंस पे हमने फोर्स लगाया है. नाउ यू कैन सी दैट इस फोर्स को जब हम लगाएंगे तो ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कराएगा. इट स्टार्ट्स रोटेटिंग दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. सो जब भी फोर्स का इफेक्ट ऐसा होता है कि वो ऑब्जेक्ट में हमारा रोटेशन या वो ऑब्जेक्ट टर्न करने लग जाए, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ अ फोर्स. सो moment of a force is the product of force and perpendicular distance from the point about which uh, it will turn the object. So this is how moment of a force can be calculated mathematically. So tau is given by F into d, where F is the force and d is the perpendicular distance between the point about which object will rotate and the force. Suppose you have an object like this, एंड ये हमारा पॉइंट है जिसके अबाउट ये ऑब्जेक्ट रोटेट करेगी, एंड फोर्स मैंने यहाँ कहीं लगाया है इस जगह पे. दिस इज़ योर फोर्स. सो हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट एंड फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो दिस इज़ योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अगर जो डिस्टेंस आपको ये दे रखी है, देन दिस इज़ नॉट द एक्चुअल डिस्टेंस. यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, देन यू विल अप्लाई द फॉर्मूला एफ इंटू डी. सो आई होप this thing will be clear to you that we only require the perpendicular distance. Now, moving ahead, uh, now we will discuss about the unit of a moment. So moment is given by F into D. Okay, and moment or torque is always represented by tau. Some people also call it tau, but I am calling it tau. So tau is equals to F into D. Now, unit of F is Newton and unit of D is meter, because D is the distance. So the unit of tau becomes Newton into meter. So now, moving ahead to the next topic, we'll talk about types of movement. So it can be clockwise and anti-clockwise. So when object rotates in clockwise direction, it is called as clockwise movement. So here you can see that this is your object O. Suppose this is your object O, and it will rotate about a point O. So हमने O से एक d डिस्टेंस पे फोर्स लगाया है. Now, so now you can see that this object will rotate in this particular direction, and clock also moves in this particular direction. So this is your clockwise movement, and for the anti-clockwise movement, object should rotate in the opposite direction. So this is your anti-clockwise movement. Now, examples of daily life. So before
you know, going to the examples, or say this is also an example. So you have a wrench there. So you can see that uh, there are 2 points of application of force. First force is applied on the B point, then is applied on the A point. Now this is, screw, so it will rotate about this point, say O. So O से ये जो जो A फोर्स हमने अप्लाई करा है, सो उसका डिस्टेंस हमारा कितना है 1 मीटर, एंड फोर्स हमारा कितना है 20 न्यूटन. सो यू कैन सी दैट द torque generated by this force A is equals to 20 into that perpendicular distance is 1. So that is your 20 Newton into meter. Now if we calculate the force for the calculate the moment for the force B, so you can see that tau B is equals to your force is 10 Newton and your distance is 2 meter. So again it will become 20. Now you can see that torque produced by 10 न्यूटन इज इक्वल टू टर्क प्रोड्यूस्ड बाई 20 न्यूटन. मतलब ये हो गया कि जितना टर्क आप 10 न्यूटन से प्रोड्यूस कर पा रहे हो उतना 20 न्यूटन से भी प्रोड्यूस कर रहे हो. रीज़न ये है क्योंकि 20 न्यूटन को हमने लेस डिस्टेंस पे लगाया है एंड 10 न्यूटन हमारा ग्रेटर डिस्टेंस पे है. सो इससे रिजल्ट हमारा ये निकल रहा है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे आप फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा टर्क हमारा प्रोड्यूस होगा. सो this concept is basically utilized in opening the screws. Suppose you wish to open this screw by the hand, so you cannot open just because there is no torque, because your distance is 0. Now if you know have only 10 Newton force, suppose आप मैक्सिमम फोर्स कितना अप्लाई कर सकते हो 10 न्यूटन, और आपने 1 मीटर की डिस्टेंस पे फोर्स लगाया, सो टर्क कितना प्रोड्यूस होगा 10 न्यूटन into meter. So which means you cannot open this screw. So अगर जो आप इसको 10 न्यूटन से खोलना चाहते हो, then you will have to apply a force at a greater distance. So इस तरह से हम कह सकते हैं कि कम फोर्स लगा के अगर जो आप ज़्यादा डिस्टेंस पे लगाओगे तो आप ज़्यादा टर्क जनरेट करोगे एंड फाइनली दिस स्क्रू विल बी opened. Now another example, you can see that there is a man and there is a small boy. The weight of the man is 160 pounds and weight of the boy is 40 pounds. So now if and they are sitting on a seesaw. So if boy wants to balance this seesaw, so you can see that he has to sit at a large distance from this particular point, and this is point of this point is called as point of balance, और इसको हम fulcrum भी बोलते हैं. So now you can see that this boy is sitting at a distance of 16 feet. So now you can see that torque produced by this boy is equals to 40 into 16, and torque produced by this man is equals to 160 into 4. So both torques will be equal, therefore this seesaw will be balanced. So now you can see that there is a small boy who is sitting एंड हु विश टू बैलेंस, तो उसको क्या करना होगा, ज़्यादा डिस्टेंस पे बैठ जाए तो वो बैलेंस हो जाएगा. नाउ दिस इज आई थिंक therefore distance plays a very large role in determining the torque. So again you can see that there is a mechanic who is trying to open this nut somewhere here at this particular point. So अगर जो वो यहाँ पे फोर्स लगाएगा सो हो सकता ना खोल पाए, बट अगर जो वो एकदम इसके बॉटम सॉरी इसके एंड में जाके फोर्स अप्लाई करेगा, सो दैट स्क्रू विल बी ओपनड. सो अगेन ही इज इंक्रीजिंग द नेट टॉर्क जस्ट बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, बिकॉज फोर्स जितना है उसके पास वो फिक्स है. सो जब लार्जर डिस्टेंस पे लगाएगा तो ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा एंड in the process this nut will be opened. Now let's discuss this another aspect of force. Okay, so suppose you have a knife and you have a say any plane, or you have a plate,
एंड ये आपका नाइफ का एज कुछ ऐसा बड़ा पतला सा रहेगा एंड प्लेट हमारा कुछ इस तरह से रहेगा। सो मैं बोल रहा हूँ कि आप प्लेट पे कुछ फोर्स लगाएं नीचे की तरफ। जितने फोर्स से आप प्लेट पे प्रेस करें उतने फोर्स से ही नाइफ पे भी प्रेस करें। तो क्या होगा, जब आप नाइफ पे प्रेस कर रहे होंगे तो हो सकता है आपका उंगली कट जाए। सो यू नो देयर मे स्टार्ट ब्लीडिंग ऑल्सो। सो नाउ दो एग्जांपल्स मैंने लिए, एक हमने नाइफ का लिया डिस्कस करा एंड सेकंड एग्जांपल वाज ऑफ द प्लेट। सो नाइफ में जब हमने उतना फोर्स लगाया तो हमारे उंगली में कट हो गया, जिससे इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग। एंड जब हमने प्लेट पे उतने फोर्स से प्रेस किया तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो इसका मतलब फोर्स का रिलेशन कहीं ना कहीं एरिया से है। ओके, so when force is related to area it is called pressure. So you can see that effect of force on a surface depends on the surface area over which the force is applied. Bigger area, less will be the force. So now this aspect is called pressure. Now we will define what exactly pressure means. So pressure is defined as the force acting per unit area. If F is the force and A is the area, then pressure is given by P is equals to F upon A. Now one more thing, thrust. So thrust is basically a type of force और से नॉर्मल एक्टिंग फोर्स। मतलब ये हुआ, सपोज एक आपके पास कोई सरफेस है उस पर परपेंडिकुलर, आई कांट ड्रॉ द पिक्चर एयर, बट सपोज यू हैव अ सरफेस लाइक दिस, ये आपका सरफेस है, इस पे फोर्स हमने इस तरह से लगाया है, परपेंडिकुलर फोर्स लगाया है। सो दैट फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट। सो प्रेशर इज गिवन बाय थ्रस्ट अपॉन फोर्स, विच मीन्स थ्रस्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। जो भी परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रस्ट। अगेन आई एम ड्राइंग, सपोज दिस इज योर सरफेस। सो उस पर ये जो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगता है, सॉरी टच पेन इज you know does not working properly, so that force is called thrust. Now unit of uh, pressure, so since P is equals to F upon A and F का unit हमारा क्या है, न्यूटन, and area का unit क्या है, मीटर स्क्वायर, so unit will be Newton per meter square. Now first we will see some examples of this pressure, then we'll come to the liquid pressure. Now you can see that uh, there is a mechanic who is trying to insert these two objects. There is an object and there is a pin in this particular wall. So first he strikes with a hammer on this particular object, so you can see that there is a large area. So this object will not go inside the wall, but as soon as he applies the same force, suppose he is applying 50 Newton force on this particular object, same force 50 Newton he applied in this on this particular pin. So as soon as he applied 50 Newton, this pin will go inside the wall. So अब आप देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस क्या है। देखिए यहाँ पे एरिया हमारा बहुत ज़्यादा था एंड यहाँ जो पिन का एरिया था वो बहुत ही कम था, विच मीन्स फोर्स इज सेम बट जस्ट बिकॉज एरिया इज लेस, देयरफॉर pressure produced at this particular point will be more as compared to this particular point. एंड सिंस यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर हो रहा है तो ये जो पिन होगा तुरंत हमारा वॉल के अंदर इंसर्ट कर जाएगा. सो आई थिंक you all will be clear now. One more thing I would like to tell you. Okay, so here is the formula of pressure, that is force upon area. So you can see that area is at the in the denominator, so and pressure, so P is equals to F upon A. So area is in the denominator, which means more the area, lesser will be the pressure. So now, so if I want to increase the pressure, I have to reduce the area. इसको देख सकते हैं, suppose you have a force of 50 Newton and आपका area कितना है, 10 है, so your pressure will be 5. and suppose you have another force of 50 Newton and आपका area मैंने कम करके 1 कर दिया, so your pressure becomes 50. So you can see that when area is decreasing, pressure is increasing.
एरो हमारा डाउनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब एरिया कम हो रहा है, एरो अपवर्ड जा रहा है, इसका मतलब प्रेशर हमारा बढ़ रहा है. सो वी हैव अ इन्वर्स रिलेशनशिप एंड दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड इन्वर्स. मतलब ये हुआ जब एक चीज़ इंक्रीज हो और दूसरी चीज़ डिक्रीज हो, तो इस रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्स रिलेशनशिप. सो व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस एरिया डिक्रीजेस. Okay. So this is what the fundamental concept behind all these things. Now moving ahead, another example where you can see that how area is affecting the pressure. Now you have a sponge over there and a brick is placed on the sponge. अब देख सकते हैं यहाँ पे brick को मैंने vertically place करा हुआ है, तो vertically place करने से यहाँ का एरिया हमारा कम हो गया है. एंड यहाँ देख सकते हैं हॉरिजॉन्टली मैंने प्लेस करा हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेस करने से एरिया हमारा इंक्रीज हो गया है. सो यू कैन सी दैट स्पंज जब हमने वर्टिकली प्लेस किया तो स्पंज हमारा ज़्यादा प्रेस हो जाता है एज कम्पेयर टू एज कम्पेयर्ड comparing with this as comparing with this figure, this here sponge will shrink more as compared to this figure. So this is how area can affect the pressure, because here the area is greater, therefore pressure will be less, therefore this brick will not go that down as in this particular figure. So now I think the concept of pressure and its dependence on the area is also clear to you. Now another example, this is your skate shoe and this is your normal shoe. So normal shoe का surface आप देख सकते हैं कुछ ऐसा होता है इस तरह से, विच मीन सरफेस एरिया इज़ लार्ज. जब स्केट शू की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे शूज़ में कुछ पिंस निकली रहती हैं. सो ड्यू टू दीज पिंस area will be less, so more pressure will be generated. So these pins will be inserted in the ice, and since these are inserted in the ice, now you can easily walk on the ice bergs or surface where which is totally covered by the ice. So this is another example of pressure increasing with decrease in area. Now I will come to next topic, that is liquid pressure. So pressure inserted by liquids is called liquid pressure. It exerts lateral pressure too. Okay, now you have a container over there. यहाँ पे मैंने इतना लिक्विड फिल करके रखा हुआ है. इट कैन बी एनी लिक्विड, इट कैन बी अल्कोहल, इट कैन H2O, इट कैन एसिड, इट कैन बी अ बेस. सो अब देख सकते हैं आप लिक्विड का कुछ ना कुछ मास होगा तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे प्रेशर लगाएगा. ओके, नाउ यहाँ पे लिक्विड्स में होता क्या है, सिंस दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेडिंग, सो इस प्रॉपर्टी की वजह से इन वॉल्स पे भी प्रेशर लगाएंगे. ये जो वॉल्स हैं यहाँ पर भी एक प्रेशर लग रहा होगा एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज लेटरल प्रेशर. सपोज यू हैव अ सॉलिड को मैंने ऐसे किसी सरफेस पे रख रखा है, तो सॉलिड क्या करेगा, वो सिर्फ डाउनवर्ड प्रेशर लगाएगा, इस तरफ सॉलिड कोई प्रेशर नहीं लगाएगा, बिकॉज सॉलिड्स में फ्लो करने वाली या स्प्रेड करने वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं होती. बट लिक्विड्स हैव दैट प्रॉपर्टी. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दे विल अप्लाई अ pressure in these particular directions. All these points there will be a lateral pressure. So all these pressures are called as lateral pressure. So now factors affecting the liquid pressure. First is the density of the liquid. Actually pressure of a liquid is given by H rho g. This rho I will write HdG. P is equals to HdG. H is the depth of the liquid, D is the density of the liquid and G is the gravitational acceleration. So D is the density of a liquid, which means प्रेशर जो किस पे प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे. जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा हमारा प्रेशर प्रोड्यूस होगा. Now again I will write the formula, P is equals to HdG. Again you can see that if I increase H, P will be increased by same proportion. So again I can say that pressure is directly proportional to the height. So I have two things. First, pressure is directly proportional to the density, then I have pressure is directly proportional to the height. Next, liquid pressure will be same at the given depth. Okay, suppose दिस इज़ योर लिक्विड, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर डेप्थ. सो इस डेप्थ के हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर यहाँ आएगा वही प्रेशर इस जगह पे आएगा, वही प्रेशर इस जगह पे आएगा. मतलब इस हाइट के सभी पॉइंट्स पे प्रेशर क्या है, इक्वल है.
Now we will talk about a new aspect, that is atmospheric pressure. So pressure exerted by the atmosphere is called atmospheric pressure. Its value is 1.013 into 10 to the power 3 pascals. So this is, I think, all about. Now, uh, according to your new reduced syllabus, the calculations of pressure and movement are eliminated, but I will solve some questions for you so that you can understand what actually these things are. So suppose you have a force of 20 Newton and it is applied at a distance of 10 centimeter. Then you have to calculate the force. So tau is equals to F torque, sorry, tau is equals to F into D. So your F is 20 and D is 10 centimeter. So this centimeter has to be converted into meter. So divide by 100. This 0 will be cancelled by this 0 and this 0. So your torque will be 2 Newton into meter. This is how your torque can be calculated. Now suppose in the next question you have a force of 20 Newton and बोला गया है कि वो फोर्स हमारा 200 या 2000 centimeter square area पे लग रहा है. Then you have to calculate the pressure. So pressure is given by F by A. So F is 20 and area कितना है आपका 20,000 centimeter square. So centimeter को मीटर में convert करना है तो multiply by -4. So this 0 will be cancelled by, it will become 100. So ये 10 to the power -4 ऊपर जाएगा तो +4 बन जाएगा. 10 to the power 4 का मतलब 1 के आगे टोटल नंबर ऑफ जीरोज 4 है. यहाँ पे 2 zeros हैं कैंसिल. सो योर प्रेशर विल बी 100 Newton per meter square. So this is how your pressure can be calculated. So with this I close this video. I hope all the things discussed in this particular chapter will be clear to you. Thank you.